कल कुछ बच्चों ने बोला था कि उनको कुछ डाउट है, डाउट नहीं बल्कि उनको पूछना था अबाउट दिस सिलेबस इन बीएच खान। तो मैंने मार्क कर लिया है, मैं आप Yes, लोग sir. को भी बता दूंगा। We have only 24 students right now. Shall I start or shall I wait? बच्चे लेट ज्वाइन करने लगते हैं। ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स होंगी। I'm waiting for 2 more minutes, then I will mark syllabus.
I think I shall start the marking work. Let me share the book with you. Okay, according to syllabus, we have to study about the solar energy, wind energy and small hydro energy. तो हमारे पास 6 चैप्टर अभी पढ़ने के हैं, चैप्टर 1, 4, 5, 6, 7 एंड 11. Am I audible? Yes, sir. अब ये BH खान की बुक है. इसमें चैप्टर 1, fundamentals of energy, the general introductory topic are available in this chapter. Then we have to study chapter 4, solar energy basics, and chapter 5, solar thermal system, chapter 6, solar photovoltaic systems, chapter 7, wind energy, and then chapter 11, small hydro resources. Apart from that, I have also shared the PPTs of unit 1 with you. You can सर ये go पूरे चैप्टर्स करने हैं सर? नहीं मैं अभी इसमें टॉपिक लिखवा रहा हूँ आपको. अभी जनरल बता रहा था. चैप्टर 1, 4, 5, 6, 7 एंड 11. चैप्टर 1 में टॉपिक 1.1, देन 1.3, 1.4, 1.5. आप लोग लिख रहे हैं ना बच्चों? यस सर. 1. शुरू से बता रहा हूँ. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, then 1.8 and 1.9. ठीक है. Then you can also study about 1.12. 1.12 जहाँ पे ये एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता रहा है. then go to chapter 4. चैप्टर 4 में है टॉपिक 4.1, 4.2, 4.3. 4.3 में मैं जहाँ पे इंट्रोडक्शन वर्ड यूज करूंगा वहाँ पे ये मानिए कि आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट ही पढ़ना है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. दे कैन आस्क यू व्हाट इज सोलर एनर्जी स्पेक्ट्रम. सो आपको स्पेक्ट्रम बनाना पड़ सकता है जो मैंने आपको बताया था टेरेस्ट्रियल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का. So 4.1, 4.2, 4.3 intro, then 4.4, 5, 6, 7 full. Okay. Then 4.10 introduction level. 4 चैप्टर में बस इतना ही है. Then चैप्टर 5. चैप्टर 5 में है 5.1. 5.1 में भी 5.1 के में ही सब टॉपिक्स हैं. 5.1.1 से 5.1.4. देन 5.15 इंट्रोडक्शन लेवल पे. देन 5.16. देन 5.2 से लेके 5.11 सारी है इसमें. 2 से 11 जो है बेसिकली एप्लीकेशंस है सोलर थर्मल सिस्टम की. दे कैन आस्क यू डायरेक्टली व्हाट इज अ सोलर थर्मल सिस्टम. दे कैन आस्क यू इन जनरल explain any one or two type of application of solar thermal system. So you should be aware about different application. तो 5.1 इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मानिए. 5.2 से 11 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. तो 5.1 ही आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है. सोलर कलेक्टर्स हैं जिसमें सारे. देन चैप्टर 6 में 6.1.1 से 6.1.3. देन 6.2.1 इंट्रोडक्शन. Then 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7.
देन 6.3 डिटेल में, देन 6.4 में 6.4.1 से 6.4.4 तक है, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ना है आपको। देन 6.8, देन 6.9 इंट्रोडक्शन, इंट्रो लेवल पे, ठीक है। देन चैप्टर 7 में 7.1, 7.2 में इंट्रो, 7.3, 7.4, 7.7, 7.7 में 7.7.1 से 7.7.5, 7.7 में 7.7.1 से 7.7.5, then 7.8, then 7.11, 7.12, and in the end 7.13 introductory part. पब्लिक पूछते नहीं है प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा बहुत इसमें विंड एनर्जी का डेटा बता रखा है हिंदुस्तान का, तो आपको थोड़ा सा वो देखना है। Then there is chapter 11. In chapter 11 we have to study topic 1 to 5, मतलब इसमें सारा ही पढ़ना है 11 चैप्टर में, इसमें कुछ टॉपिक कम है। So please go through the PPTs that I have made so that you can go through different basically इसमें पूछ सकते हैं कि explain about different solar hydro power plants या फिर simple हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्जन सिस्टम जो भी है, कैसे आप डिटेल में बताइए। इसमें ज़्यादा समझा नहीं रखा है, तो थोड़ा सा आपको जो मैंने नोट्स दिए उनमें से देखना पड़ेगा। तो इसमें टॉपिक 11.1 2 3 3 4 5 जो है ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि आपको टरबाइन के बारे में पूछा जाएगा कि पेल्टन टरबाइन पर समझाओ, फ्रांसिस समझाओ, कैप्लन समझाओ, वो नहीं पूछेंगे। तो जनरली आपसे 11.1 और 11.2 के बारे में ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे। मेरे को दिखाया था इसमें क्या है, 190 के आसपास था। यहाँ से शुरू है, जैसे आप देखिए 11.1 पूछ सकते हैं, एंड देन इसी के अंदर ये टिपिकल लेआउट ऑफ अ हाइड्रो पावर स्टेशन ये बनाना आ सकता है। देन 11.2 इसके कंपोनेंट्स, बाकी आगे टरबाइन के बारे में यू ऑल आर मच अवेयर अबाउट दैट, तो जस्ट गो थ्रू देम, रीडिंग कर लेना बस कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सो यू विल बी एबल टू आंसर। आई बिलीव देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दीज टॉपिक्स 11.3, 4 and 5. These are being asked by in your this fluid system topic. सबने मार्क कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक सिलेबस में? देखा किसी ने सिलेबस? आई बिलीव आज मीटिंग होगी आपके सिलेबस ये एग्जाम के बारे में। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, एज पर स्पेक्यूलेशन यू विल बी हैविंग 45 क्वेश्चंस एमसीक्यूज ऑनलाइन टेस्ट। क्विज इसमें आपको एमसीक्यूज ही आएंगे। यू जस्ट हैव टू आई थिंक यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। ऑफिशियल टाइम कितना भी पता नहीं, और कंसर्न टीचर की हो सकता है कि ड्यूटी लगाए इसमें, हमारी अभी वो भी नहीं पता। So let's wait for the official announcement, and I believe we will get the information by today. Okay. So start preparing. किसी को कोई डाउट है बच्चों? सर पेपर मेन आपके पीपीटी अगर हम पढ़ते हैं सिर्फ, जैसे बुक्स में अगर हम प्रेफर ना करें, तो सर पीपीटी से हो पाएगा? मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ पीपीटी से पढ़ो। पीपीटी में हम लोग कंसाइज वे में लिखते हैं बच्चे, बुक से देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर करे हुए हैं, एक बार उसको गो थ्रू करना, ठीक है? उससे आपको पता चलेगा कि पीपीटीज में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर पाते। डाउट? सर जिन बच्चों ने क्विज दी थी उनको तो बेनिफिट मिलेगा ना? आई बिलीव मिलेगा ही, क्योंकि तभी तो क्विज लिया है। अब ये यूनिवर्सिटी वाले अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज करते रहते, क्या क्या बोल रहे बच्चे, आप बताओ। पहले उनकी जो एकेडमिक कैलेंडर आया था उसमें उन्होंने लिखा था कि एक मिनट होल्ड करो। पहले जो उनका एकेडमिक कैलेंडर आया था उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि देयर विल नॉट बी एनी मिड टर्म एग्जाम। अब वो नया एक इंफॉर्मेशन निकालें दैट देयर विल बी अ मिड टर्म। We just have to stick with the guidelines. We cannot say anything. सर नंबर तो आप ही दोगे सर, तो आपने जो कमिटमेंट कर रखी है उस हिसाब से नंबर मिलने चाहिए। कमिटमेंट मेरी तो ठीक है, अब यूनिवर्सिटी वालों ने गाइडलाइन चेंज कर दी तो उस हिसाब से मैं जितना कर पाऊंगा मैं अपनी तरफ से करूंगा, ठीक है? मैं ओके, थैंक यू सर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बैकफुट पे रहूंगा, जो मैं अपनी तरफ से कर पाऊंगा वो मेरी तरफ से है कमिटमेंट। मेरी तरफ से क्या, सब टीचरों की तरफ से है वो, ठीक है ना? कल तुम आए नहीं थे मयंक? कल तुम आए नहीं थे? यस सर, सर था मैं। कल थे क्लास में? अच्छा, कल Yes, कोई sir. डाउट नहीं आया? यस सर। इसी के बाद लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है रिन्यूएबल एनर्जी का। किसी के पास लास्ट ईयर का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का पेपर है? नो सर। तो लास्ट ईयर का नहीं मिल रहा, कॉलेज में भी पता नहीं कहाँ मिलेगा, जाके ढूंढता हूँ मैं। चलो द लास्ट क्लास मैं आगे चलूँ अब, है बच्चों? यस सर। आगे बढ़ा दूँ या कोई पीछे का कुछ पूछना है? बोलिए। सर आगे ही पढ़ा दो सर। ठीक है, ओके। As per syllabus, we have studied about the biomass, about different processes, the photosynthesis, resources, cultivation, these terms. Today, I am going to start on different definitions like incineration, wood and wood waste, harvesting, super tree, energy forest. ये चार के लिए मैंने अभी बनाया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। सो incineration means direct combustion of biomass for immediate useful heat. मतलब एक सिस्टम में हमने अपने, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। आप देखिए कि हमने जैसे सिस्टम में एक बंकर में से हमने इसको बर्न किया, अपने जो भी कंपाउंड थे, बॉयलर से हीट निकली और उससे हमारी एनर्जी आ गई जो भी हमें यूज़ करनी थी। दिस इज अ सिंपल सिस्टम। नॉर्मली इंसिनरेशन का मतलब उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में गर्म करना, जिससे कि जो भी एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम यूज़ कर सकें, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ गैस और सम अदर burning process. So the heat or steam produced are either used to generate electricity or provide the heat for industrial processes, space heating, cooking and district heating. Okay, ये जनरल एक आपका एप्लीकेशन है। Furnace and boilers
have been developed for large-scale burning of various types of biomass such as wood, wood waste, black liquid from pulp industry. Pulp industry में क्या होता है कि आपने फ्रूट पल्प निकाल लिया, तो जो भी बचा कुचा रह गया वहाँ पे, उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं जलाने के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए. And MSW means municipal solid waste. The moisture content in the biomass and wide range of composition tends to decrease the efficiency of the conversion. So it is always better to dry up the biomass first. अगर सूखा होगा तो उसमें moisture की वजह से हमारे energy drop नहीं होगा, and we can get the maximum benefit out of it. So it is always preferable to first dry up the biomass. अगर decompose हो रहा है, then we have no choice. Either we have to use it or we have to you can say landfill with the biomass. But since it depends upon the emissions being liberated and the environmental norms of that particular location or country. अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली में आपको बोले कि बायोमास चलाओ, I believe it is not an easy task due to NGT and the other governing agencies in India. क्योंकि उनके हिसाब से जो polluted areas है वहाँ पे हम इतना ज़्यादा burning नहीं कर सकते. So it depends upon the geographical location, the standardization of the country of the particular location. But there are many benefits of using an incineration plant, as we can directly liberate the heat from the system and use it for running our another system. ये डायग्राम में आपको दिखाई चुका कि जनरल सिस्टम है. ये एग्जाम में आपको पूछेंगे नहीं कि इंसिनरेशन सिस्टम का एक डायग्राम बनाओ. दिस इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन कि मैंने दिखाया. We can get energy from MSW or municipal solid waste. And municipal solid waste often called garbage. जो आप घर से अपना कूड़ा फेंक रहे हो, that is a municipal solid waste. इसमें सारे अलग अलग कंपाउंड होते हैं. इसमें प्लास्टिक भी होता है, इसमें वुड भी होता है, इसमें पेपर भी होता है, इसमें अलग पैकिंग मटेरियल्स होते हैं. So they normally separate the different components of the municipal solid waste and decompose them and get the energy out of it. For example, MSW contains biomass plants. मतलब जो भी आपका खाने का जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचा, आपने फ्रूट्स काटे तो उसमें जो छिलके बचे, इसमें सब्जी काटी जो आपका खराब खाना था वो बचा. Then there are some paper, some cardboard, food waste, leaves, wood, some leather products, some whatever the thing that can burn and give us energy can be considered as a municipal solid waste. इससे हम बायोमास बना सकते हैं. एंड प्लास्टिक एंड मतलब इनको भी फर्दर यूज कर सकते हैं. पेट्रोलियम आज की डेट में क्या है कि प्लास्टिक ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ गुड सब्स्टिट्यूट टू डीजल, बट द डिसएडवांटेज इज दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. अब प्लास्टिक के अंदर 20% के आसपास आपका पेट्रोल ऑयल होता है. दैट कैन बी यूज्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल. ठीक है. देन देयर आर अदर कंपोनेंट्स इन द municipal solid waste like glass and metal which cannot be used and should be separated out and can be recycled for a different application. This is a simple system showing the power generation from a landfill gas and solid waste to energy recycling facility. जो बड़े सारे प्लांट्स हैं, बड़े सारे अलग अलग सेटअप्स हैं. आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो आपको अलग अलग सिस्टम्स के बड़े सारे सेटअप्स मिलेंगे. So you can use it wisely depending upon the capital of the company and the general requirement of the, or you can say government regulation. Then we can use wood and wood waste. Now people have been using wood for, you can say, many centuries, and it is mainly the major source of energy for most of the population till today in India and many backward countries. So wood continues to be an important fuel in many countries. We can use it directly or we can convert it to some other useful form like charcoal that we have discussed yesterday. And I am considering a data that I have received that about 2% of total US energy consumption was from wood and wood waste. The waste can be bark, मतलब जो भी आपका नीचे का जो पोर्शन हो गया, and sawdust, wood chips, wood scrap and paper mill रहती है.
ये सब चीज़ों को जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ है उसको रीयूज़ कर सकते हैं जलाने के। घर में जो छोटा-मोटा काम हो रहा होता है कारपेंटर, वो सारा काम तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, कहीं कबाड़ में फेंक देते हैं, बट कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड बर्निंग पर्पस। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग विंटर most of the people are using these wood chips, wood dust, and will search for that for general heating purposes in their homes or in the open fields. And industry, electric power producers, and commercial businesses use most of the wood and wood waste fuel. And नॉर्मली इससे आप क्या बना सकते हैं, या तो आप इसको हीटिंग के लिए करोगे जनरल, अपनी नॉर्मल जो डोमेस्टिक हीटिंग है, यू कैन यूज इट फॉर the production of steam, electricity, but since the energy content is low, it is not a very beneficial thing, as we have to give a lot of input in the form of wood or wood waste, and then only we are going to get the steam and run the turbine for the generation of electricity. And you have also seen that कभी भी हमें कोयला जलाना हो या चारकोल जलाना हो तो उसमें थोड़ी सी लकड़ी पहले डाली जाती है, सीधा हम कोयला चारकोल नहीं यूज करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू बी बर्न। कोल इज नॉट इजी टू बी बर्न डायरेक्टली, तो थोड़ा सा उसको अलग से सुलगा के फिर पहले बाद में उसमें कोयला या फिर चारकोल जो हमें डालना है, ठीक है। अब इसमें एंड में ये भी लिखा है कि सिंस द एमिशंस लिबरेटेड फ्रॉम द वुड चिप्स ऑफ वुड आर क्वाइट low, so it can be used for reducing the sulfur dioxide emissions from a power plant and can help in reaching the desired emission guidelines. दो टॉपिक आपकी बुक में बिल्कुल नहीं है, दे आर सुपर ट्रीज एंड एनर्जी फॉरेस्ट। तो मैंने सर्च तो किया था पहले भी, मैं ढूंढा इसको कई बारी, तो इसी बुक में इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डिटेल में क्या मतलब टच भी नहीं कर रखा। मुझे जैसा समझ आया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च पेपर से ढूंढा, कुछ मेरे को और टीचर से डिस्कस किया, तो मुझे ये मिला था कि सुपर ट्री एक ऐसा ट्री है या ऐसे ट्रीज हैं जो कि एक कंट्रोल्ड कंडीशन में बना, जिसको हम उगाते हैं सो दैट दे गिव मोर अमाउंट ऑफ टिम्बर, या लकड़ी उससे जो हमें मिल रही है वो ज़्यादा अमाउंट की मिल रही है। तो हमने सुपर ट्रीज को ऐसे एनवायरनमेंट में बनाया, जैसे आपने आज की डेट में देखा होगा कि फार्मर्स ग्रीन हाउस, छोटे छोटे टेंट्स बना देते हैं प्लास्टिक की ट्यूबिंग लगा के, ग्रीन हाउस उसमें फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। सिमिलरली मतलब सुपर ट्रीज आर आल्सो बीइंग ग्रोन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू गिव द ह्यूज अमाउंट ऑफ टिम्बर। अगर हम नेचुरल तरीके से देखेंगे तो उतना टिम्बर नहीं मिलता है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ यू कैन से वाटर, अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर, अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हमें देखें कि टाइम हमें सेम रखना है तो हमें कम टाइम लगा के या कम इनपुट दे के हमें सेम उससे ज़्यादा हमें टिम्बर मिल जाए, तो दैट इज नोन एज अ सुपर ट्री। सो यूजिंग सच टेक्निक्स लाइक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, ग्राफ्टिंग एंड पीरियोडिक फॉरेस्टिंग, tree resources can increase the yield from woodland to extent never before seen before. And we have seen that because of large reduction in the cultivated land, we require the trees which can grow very fast and can help in uh, in fulfilling the requirement of the tree for domestic purposes, for industrial purposes. Even it should be used as a fuel, which almost give very less emissions. तो ज़्यादा एमिशन ना हो, हम ऐसे ट्रीज को उगाएंगे, क्योंकि इनके मटेरियल पे ही डिपेंड करता है कैसे ये उग रहे हैं। So these are normally known as super trees. The average super tree grows faster, taller, straighter, and healthier than ordinary tree, and it produces more wood. And like all trees, a super tree is a renewable source. Okay. तो आपसे 2 या 3 नंबर में कहीं पूछा जाए सुपर ट्री क्या होता है, तो आपको जनरल ये बताना है कि these are the trees which are being grown in a healthy environment with a controlled environment, so that we are getting a faster, taller, straighter, and healthier than the ordinary tree, and these are renewable. जनरल आपको ये बताना। Then why we are having a more requirement of wood, as
हमारे को जैसे देश हमारा बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो पीपल रिक्वायर सेपरेट होम्स, न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो वहाँ पे सबको अलग घर चाहिए तो लकड़ी लगेगी। लकड़ी we normally get from the trees, and that is why the need for wood is increasing. Also, as we are having separate homes, urbanization, increasing population, so people require uh, more amount of electricity. Some of the electricity can be generated from wood, some of the electricity can be generated from other sources. That depends upon the requirement. Now the giant plastic industry now depends on petroleum, and हमें क्या चाहिए कि वहाँ पे हीटिंग करनी है, कुछ करना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ वुड और विद चिप्स और चारकोल और कोल और सम अदर कंपोनेंट दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम वुड। कई बार क्या होता है, वुड से हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी बनाए थे, एंड प्रोड्यूसर गैस कैन बी यूज्ड टू रन स्मॉल इंजन्स। दैट इंजन्स कैन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग हीट, कैन हेल्प इन running a small equipment, can help in transportation purposes also. Then energy forest. They are very much similar to a super tree. अगर हम एक ट्री की बात करें तो दैट इज अ सुपर ट्री। अगर हम पूरे फॉरेस्ट की बात करें जहाँ पे हमने काफी एरिया को कंसीडर कर लिया है, दैट इज अ एनर्जी फॉरेस्ट। सो एनर्जी फॉरेस्ट इज अ forest grown and used for biomass production, that is generally for the fulfillment of our energy requirement. So energy forest also known as short rotation plantation या short rotation crops भी कई बार कहते हैं उसको। These are the general terms in which इसको बहुत पहले यूज नहीं करते थे इंडिया में, तो अभी भी काफी हद तक इसको यूज नहीं कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द countries which are focusing on renewable energy or having lesser amount of fossil fuels are considering energy forest as a major requirement for them, as they just have to provide the land and some resources, and they are going to get better output and a more amount of timber and wood out of the energy forest. So in the energy forest, short rotation plantation means we are going to get a better tree out of it. मतलब कुछ कुछ दिनों में जैसे एक उग गया, उसको हटा के हमने दूसरा ऐसा लगाया जो कि बचे हुए न्यूट्रिएंट से आपने काम कर सकता है। इट इज लाइक अ यू कैन से क्रॉप रोटेशन टेक्निक। ठीक है, similarly we are rotating the plants or the trees to get a maximum amount of timber and wood out of it. So it includes the production of rapidly growing species of trees like willow, cedar and populus. ठीक है, तो मतलब ये दो अलग अलग ट्रीज हैं जो नॉर्मली इसमें यूज करते हैं। श्राउड मतलब नीचे का जो पोर्शन होता है ट्री का, जो मतलब बॉडी हो जाती है। रोटेशन प्लांटेशन कैन ग्रो इन अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। While populars are commonly cultivated in drier, willows have been found to be more suitable crop for region characterized by short period of vegetable growth and higher level of precipitation. जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग जो है विलोज का यूज कर लेते हैं, और जहाँ पे आपका ड्राई एरिया वहाँ पे पॉपुलर्स। देन हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमें इनपुट भी देना पड़ता है। इनपुट हम क्या कर सकते हैं, सॉइल उसमें थोड़ी बहुत हमने चेंज कर दी, थोड़ा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, और वहाँ पे क्लीनिंग करते रहो प्रॉपर तरीके से कि वहाँ पे कोई और प्लांटेशन ना हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल वीड उग रही है वहाँ पे, ऐसे अनड्यू प्लांट्स उग रहे हैं जो कि हमारे जमीन में से न्यूट्रिएंट्स खींच रहे हैं। सो दैट वी हैव टू रिमूव ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, सो दैट हमारे ट्रीज को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल पाए और जल्दी उग पाए। देन SRP, really short rotation plantation, usually have a rotation cycle ranging from 3 to 6 years and in some cases even 1 to 2 years. That is 1 से 2 साल में हमारा इतना प्लांट उग जाता है कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। They involve fast growing tree species planted at very high density with up to 10,000 trees per hectare. मतलब इतनी अच्छी डेंसिटी आपको मिल रही है। The annual yield of biomass produced could has 20 tons of the matter per hectare per year if the soil and moisture content are optimal. ठीक है बच्चों,
Then the harvest of the plantation is done normally during winter when the ground is hard enough to allow the very heavy harvesting machines. The fields are then clear cut, मतलब पूरा साफ कर दिया, ये नहीं कि वहाँ पे कुछ भी छोड़ेंगे, एकदम साफ सुथरा करके दोबारा से लेवलिंग करके जितनी चिप्स है सब कुछ निकाल निकूल के हम लोग जो है उसको फर्दर यूज कर सकते हैं. Then the machines can be used directly there for conversion of the chips and can help in giving a better. This is about the different definitions that are being highlighted in your syllabus. Anyone having any doubt related to the topics that I have discussed today? No doubt? Nothing? Everything fine? Someone please respond. Yes, No sir. doubt, Without sir. names, sir. जनरल डेफिनेशन से they can ask you in 1 to 3 mark question. जनरली कुछ ज़्यादा नहीं पूछ सकते. Yes, sir. सिलेबस मार्क करा दिया. अब हमारी क्लास है फ्राइडे को. We are having our class on Friday now. Yes, sir. Friday. तो फ्राइडे एक काम करते हैं, एक डाउट क्लास रख लेते हैं. आप सब लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ाई शुरू कर ही दोगे. किसी को कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क. सर कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो मुझे मैसेज कर देना सो दैट आई कैन प्रिपेयर दैट. आप लोगों को मैं उस टॉपिक के बारे में ही बताऊंगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ गम बोलो. सर जो भी आपने हमें पीडीएफ से मार्क जो करा रहे थे सर वो कौन सी बुक थी? बुक BH खान. सर BH खान. सर आप उसको शेयर कर सकते हैं? मैंने सर ने बच्चे क्या हुआ अगम? शेयर करा हुआ अगम. मैंने एक गूगल ड्राइव का मैंने फोल्डर शेयर करा हुआ आपके साथ. यस सर है. सर अपने यस सर उसमें है. सर उसमें रहेगी उसमें हाँ उसमें बुक्स नाम का एक फोल्डर है. ओके सर. आपको देखना है तो मैं दिखाऊंगा अभी कहाँ पे. नो सर मैं एक्चुअली भूल गया था. आपने बताया था. यस सर. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का स्टूडेंट सेक्शन. मैं आपके साथ वो लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ. यस सर. इसी में करूँ या व्हाट्सएप में? सर व्हाट्सएप में कर दीजिए. ठीक है बच्चा. थैंक यू सर. एक बार मुझे कंफर्म कर देना, मैं भी भेज रहा हूँ एक. सर क्लास लीव कर सकते हैं? किसी को कुछ डाउट नहीं है तो छोड़ दीजिए. मैं एक बार वो जरा एक बार शेयर कर दूंगा. 7 में मैंने कर दिया. M8 दिया. 7 गॉट इट सर. तो बुक में मैंने कर दिया 7 8 9. यस सर. मैं टीवी में भी एक बार कर देता हूँ इनके हिसाब से कहीं मिस हो जाए सो यू कैन फाइंड द सेम हियर. इसमें मैंने कर दिया. आया नहीं. आई थिंक नो वन इज हैविंग एनी डाउट. जिसको डाउट है वो रुक जाए. कुछ पूछना है वैसे तो.
No doubt, anyone?